class 7th poem The Nightingale and the Glowworm book exercises. Tick the correct option at the start of the poem. A. Evening had ended and night had begun. The evening had just begun. The night is ending and dawn is approaching. It is noontime. The correct option is the A part. The line "not yet at eve, his notes suspended" means that Nightingale's song was still heard in the air. Song was appreciated by those in the village. Song had just begun. Singing had stopped. The correct option is the A part again. The line "might beauty and cheer the night" refers to Nightingale's song Glowworm's Glow. Both the Nightingale song and the Glowworm's Glow. Neither the Nightingale song nor the Glowworm's Glow. इसके अलावा पोएम में है ही क्या? The correct option is the C part. Answer these questions. What was the nightingale looking around eagerly for? What did he find? The answer is here. The nightingale was looking around for food as he was hungry. He saw a glowworm on the ground far below. ठीक है? According to the glowworm, A. How were the gifts useful? Answer is, according to the glowworm, his gift of light would spread beauty and the nightingale's gift of music would add cheer to the night. तो दोनों की जो गिफ्ट्स गॉड ने दिए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. Who had given them these gifts? ये गिफ्ट्स उन्हें किसने दिए हैं? These gifts had been given to them by God. ये गिफ्ट्स उन्हें गॉड ने दिए हैं. Question number 3. Did the glowworm convince the nightingale in the end? Convince माने मना पाया उसको कि मुझे मत खाओ. If so, how? अगर हाँ तो कैसे? Yes, the glowworm convinced the nightingale in the end. It did so by telling the nightingale that if they both admired each other's talent gifted to them by the same divine power, they would never harm each other. वो इसे ऐसे मना पाया है, उसने उसे याद दिलाया कि हम दोनों ही प्राणी भगवान द्वारा बनाए गए हैं. हम दोनों की उत्पत्ति का कारण सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु. और उन्होंने हमें जो गिफ्ट देके भेजा है वो हम एक दूसरे का गिफ्ट बनाए रख सकते हैं, एक दूसरे को बिना हार्म करे. थिंक एंड आंसर. व्हाट डू यू थिंक इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? आपको क्या लगता है मैसेज ऑफ द पोएम क्या है? द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट एज ऑल क्रिएचर्स हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द सेम डिवाइन क्रिएटर हु हैज़ एंडोर्ड देम विद स्पेशल गिफ्ट्स, दे नीड टू को एग्जिस्ट पीसफुली. कि जिस एक डिवाइन पावर ने उन सबको बनाया है, उन सबको स्पेशल गिफ्ट्स दिए हैं, तो उन्हें को एग्जिस्ट एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, हाथ बटाता रहना चाहिए पीसफुली, एंड उन एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए. ऑल क्रिएचर्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस विद देयर यूनिक टैलेंट्स. क्योंकि ये वर्ल्ड किसी एक के कंट्रीब्यूशन से नहीं बनता, ये सबके कंट्रीब्यूशन से बनता है. तो हम सबको एक दूसरे की मदद करते चलना चाहिए. वर्ड स्टडी में कुछ क्वेश्चन हैं, वो अब डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज़ A B B C C D D E E F F G G H H A A I I C C J J K K. दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज E part. Explain the meaning of these lines in your own words. First, he spied far off upon the ground a something shining in the dark. इसका मतलब क्या है आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. मैं आपको बताती हूँ कि what is the correct answer. The correct answer is he saw far below on the ground something shining and guessed that it was a glowworm. दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर. You would abhor to do me wrong as much as I to spoil your song. इसका मीनिंग है the bird would not harm the glowworm just as the glowworm would not do anything to spoil the song of the nightingale. तो ना तो मेरा काम बिगाड़ो ना मैं तुम्हारा काम बिगाड़ूं, तो बन जाएगा दोनों का काम. यही एडवाइस थी ग्लोवॉर्म की. नेक्स्ट है ग्रामर स्टडी. ग्रामर स्टडी में डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्लॉज इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एडवर्ब. वो एडवर्ब का काम करते हैं. इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, जैसे कि हर एडवर्ब करता है. एडवर्ब क्लॉज टेल्स अस वेयर, व्हेन, हाउ मच
Adverb clause begins with subordinating conjunctions like after, before, as, since, when, that, etc. etc. चलिए आइए. Write T for adverb clause, P for adverb clause of place, M for adverb clause of manner. You may sit wherever you like. Wherever you like is a place ना, तो P आ गया. When I get home, at what time? When I get home. I felt too tired, so it's adverb clause of time. Since they have participated means since they have practiced well. How did they practice? They practiced well, so it is adverb clause of manner. Tarun lives in a neighborhood where there are many trees. At which place? Where there are many trees, so it's adverb clause of place. The children were jumping with joy after they heard that they were going for an excursion. Adverb clause of manner. I wash my hands thoroughly before I pick my baby sister. Adverb clause of time. Before आ रहा है ना इसमें. Complete the sentence using adverb clause. आप देखो टाइम वाइम सब दिया रखा है इसमें, मैंने बना दिया, आप कॉपी कर लो. Read this poem after you finish doing your sums. Amit looked as if he had not slept during the night. Please keep the newspaper on the table. Place दे रखा है. Nadia had been playing since 5 p.m. The young boy laughed as if he recalled something funny. My father wanted to know where I had kept his car keys. So ये थी बुक एक्सरसाइजेज, चुटकियों में निपटवा दी हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए मैम की वीडियोस. बाय बाय.